Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. Today we are going to learn for CA Inter course subject accountancy topic branch account. We are going to learn question number 5. Concept with its head office at Mumbai has a branch at Nagpur. Goods are invoiced to the branch at cost plus 33 and 1/3%. Means loading is 1/3 of cost. Loading is 1/3 on cost. Same loading will become 1/4 of invoice price. Goods sent to the branch, invoice price 4,80,000. When you send the goods to the branch, what is your entry? Your entry is branch stock debit to goods sent to the branch account. Importantly, GSTB will be again debited and adjustment account will be credited for the loading element that we will see. Stock at the branch, it is your opening stock. Cash sales, what will be your entry for cash sales? Your entry will be cash or bank debit to branch stock. To branch stock. Return of goods by customers to branch. So customer is returning goods to the branch. Your entry will be branch stock account debit to branch debtors. Branch expenses which are paid in cash. If you are preparing expense account, it will be debited to the expense account. If you are not preparing expense account, it will be directly debited to P&L account. Right? So your entry will be expense or P&L account debit to cash. Branch debtors opening balance is provided to you. Discount allowed, your entry will be P&L to debtors, bad debts P&L to debtors, collection from debtors, cash to debtors. Branch checks, return dishonor, entry will be reverse, debtors to bank. Stock at branch, that is closing stock at branch. तो ये आपका closing stock है, obviously इसका closing stock का reserve भी आएगा. Branch debtors balance is given on 31st March 2013, so it is closing balance of debtors. Prepare under stock and debtor system. So which system they are following? Stock and debtor system. Following ledger accounts in the books of head office: Nagpur branch stock account, Nagpur branch debtors account, Nagpur branch adjustment account. Also compute shortage of stock at branch if any. This shortage we will see where we can find the shortage. One more account I want you people to prepare additionally is your branch P&L account. तो ये क्वेश्चन एक फुल लेंथ टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है. इट विल कैरी अराउंड 8 और 9 मार्क्स इन योर एग्जाम. क्वेश्चन बहुत इजी है. ओनली थिंग यू हैव टू फोकस. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो वी आर रेडी विद द अकाउंट्स व्हिच आर नीडेड. They have asked you to prepare these 3 accounts: Nagpur branch stock account, Nagpur branch debtors account, Nagpur branch adjustment account and branch P&L account जो हम लोगों ने रिसेंटली ऐड किया. ठीक है, तो ये सब आपके अकाउंट आपके सामने रेडी है. ठीक है, we have to just write the details. Firstly, let us write the opening balance in the branch stock account, which is 24,000 at the minute. Now, in this there will be a loading. This loading will be reversed in adjustment account as a stock reserve. Loading is 1/3 on cost, which is 1/4 of invoice price. Right? तो अपना ये जो 24,000 का जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ये इनवॉइस प्राइस है, इसका 1/4 आपका लोडिंग रहेगा. It will be 6,000. They have also given you opening balance of debtors. Branch debtors balance is given opening balance 30,000. So let us write opening balance. Now let us start posting amounts from the question as per the transaction. Goods sent to the branch, invoice price 4,80,000.
गुड्स आर सेंड टू द ब्रांच, तो ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट है वो डेबिट होगा, टू गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा। द अमाउंट इज 4,80,000। You can notice goods sent to the branch account is credited. Now when we reverse the loading, goods sent to the branch account will be debited and adjustment account will be credited. In short, अगर stock account में debit effect आता है तो loading will be reversed in adjustment account on credit side by GSTB account, that is by goods sent to the branch account. So we have reversed the loading by goods sent to the branch account. Loading in goods sent 4,80,000 का 1/4, 4 ones are 4, 4 twos are 8. In that way it is 1,80,000 or 1,20,000. Cash sales at branch. So I have already written here कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो कौन सा कैश और बैंक अकाउंट वी डोंट नो, तो वी विल जस्ट कीप इट एज अ हेड ऑफिस का कैश अकाउंट, वी नीड नॉट राइट हुज कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, next goods return of goods by customer to the branch, अमाउंट ₹6,000। कस्टमर ने ब्रांच को गुड्स रिटर्न किया, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। Branch expenses paid in cash 53,500. Branch expenses paid in cash 53,500. When we pay the expense, your entry is expense account debit to cash or bank, but those expenses will be taken to the debit of PL account. तो PL account के डेबिट में हम लोग लिखेंगे to branch expenses account. $53,500. Branch debtors opening balance we have already recorded. Discount allowed to the debtors. तो when you allow discount, your entry is branch expense account debit to debtors, और वही expense हम लोग वापस कहाँ पे डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिंपली अगर मैं बात करूंगा तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। $1,000 अमाउंट का डिस्काउंट है। Same methods will be debited to profit and loss. Next transaction is given collection from debtors. So debtors के बाद से collection हुआ, cash और bank account debit to debtors account credit, cash account तो anyway we are not preparing, debtors account can be credited. Next, branch debtors check return dishonored, entry will be reversed. Branch debtors account debit to cash or bank account again. Next, stock at branch on 31st March 2013 at an invoice price 48,000. So closing stock I am writing here. You can even write balance carried down
48,000। इसका स्टॉक रिजर्व आप रिवर्स करोगे एडजस्टमेंट अकाउंट में, $48,000 का 1/4 बिकॉज आपका लोडिंग 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस है। ब्रांच डेटर बैलेंस ऑन 31st March 2013 36,500। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज गिवन। That's it. There is no further information in your question to be recorded. Now we need to close the account. When you close the account, follow the logical order. ठीक है, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे ये पूरे क्वेश्चन में कैश सेल दिया है, कहीं पे भी क्रेडिट सेल नहीं दिया है, तो यू कैन डिराइव क्रेडिट सेल्स बाय क्लोजिंग योर डेटर्स अकाउंट। लेट्स क्लोज योर डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट में जो आपका बैलेंस फिगर है वो आपका क्रेडिट सेल्स का फिगर है। जो स्टॉक अकाउंट में आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। Now we can close our stock account. $2,000 ये आपका शॉर्टेज का इनवॉइस प्राइस है, ये आपका शॉर्टेज है, ये गुड्स कहाँ गया पता नहीं आपको। ये 2,000 में से कुछ अमाउंट लोडिंग का है, कुछ अमाउंट कॉस्ट का है। तो लोडिंग कैसे आएगा, लोडिंग विल बी 2,000 का 1/4, so goes without saying अपना कॉस्ट हो जाएगा 1,500। याद रखना ये जो कॉस्ट है ये आपका एक्चुअल में लॉस है, ये आप डेबिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये जो लोडिंग जो है, ये जो आपका लोडिंग है, ये लोडिंग आप डेबिट करोगे एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और यू कैन इवन राइट टू शॉर्टेज स्टॉक अकाउंट, चलेगा। और उसका कॉस्ट आप डेबिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इन दिस वे वी हैव क्लोज्ड आवर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। नाउ वी हैव टू क्लोज ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट आपको प्रॉफिट देगा, जो प्रॉफिट आपने रियलाइज किया है। इफ यू कैन नोटिस यहाँ पे ये जो प्रॉफिट था ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, और ये प्रॉफिट अर्न नहीं किया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट अर्न किया है। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज आवर प्रॉफिट और व्हाट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। For the sake of understanding, we will also call it as a gross profit. Practically, it is a gross profit which is realized. This is your gross profit. It is transferred to branch P&L account. ठीक है, after you close this account, obviously you'll get the profit.
In this way we have completed this simple question. I hope you have understood the solution. Question काफी इजी तरीके से सॉल्व हुआ है. फिर भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो प्लीज पुट इन योर कमेंट बॉक्स. Before I wind up the video, I request you to subscribe to our channel Ekeeda and also pass on to your friends, right, for so that they can be benefited from our channel. Thank you for watching this video. God bless you.